Hello dear children. Now today we are going to read out basic English kinds of sentences. Before this I have made the video related consonants and vowels. You can see that video and you can enhance your knowledge. Now kinds of sentences. Dear children, there are four types of sentences. One by one, each sentence I am going to describe you. First of all is assertive or declarative sentence. हाँ जी guys, जो पहला sentence है वो assertive. Okay, the assertive sentence are the sentences that make statement. Dear guys, स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ. ओके गाइस, टू टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट आर देयर. मीन्स कि जो भी हम लोग बोलते हैं भाई टू टाइप्स का होता है. या तो कहते हैं हाँ या फिर क्या कहते हैं ना. ओके, मीन्स हमारा जो आंसर होता है दो तरह से हो जाता है, हाँ या ना में. मीन्स वी कैन डिवाइड दैट. नंबर वन, पॉजिटिव. Affirmative. Number two, negative. Okay guys, जो assertive sentence होते हैं उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक तो पॉजिटिव या affirmative sentence, number two negative sentences. I am going to give you example also related it. See here. Suman always helps me. Suman always helps me. मीन्स कि सुमन जो है मेरी हमेशा हेल्प करती है. क्या है ये? पॉजिटिव है. हमने क्या किया, इसे मान लिया कि हाँ वो मेरी हेल्प करती है. Here you do not help me, but you do not help me. आप मेरी मदद नहीं करते हो. Then here Suman always helps me. It is positive. I am accepting it कि हाँ भाई she always helps me, but you do not help me. Means not negative हो गया कि हमने मना कर दिया कि यू डू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करते हो. नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. मीन्स असर्टिव सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव में हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, जैसी भी है वैसी हमने एक्सेप्ट कर लिया. एंड नेगेटिव सेंटेंस में हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते. जैसे आई हैव अ ब्लैक पप्पी, then I accept कि I have a black puppy, but I am saying I don't have a black puppy, then I am rejecting कि I don't have a black puppy. I have a black puppy, that is assertive, means assertive positive या affirmative sentence, and I don't have a black puppy, that is assertive negative statement. means कि statement टू टाइप्स होते हैं. पॉजिटिव में एक तो हमारा स्टेटमेंट होता है और दूसरा नेगेटिव में होता है. ओके गाइस, नेक्स्ट interrogative sentences. Interrogative sentence is a sentence that asks a question. Okay guys, assertive में क्या होता है, हम या हाँ कर देते हैं या ना कर देते हैं. But in the interrogative sentence we are neither doing yes nor doing no. What we are putting a question mark. Question mark put कर देते हैं, मीन्स कि उस पर क्वेश्चन लगा देते हैं. हाँ या ना पता नहीं, क्या ऐसा किया भी, अब पता ही नहीं किया या नहीं किया. All interrogative sentences are ends with a question mark sign. See here, question mark sign. Dear guys, all assertive statements ends with a full stop. And see here, also put full stop, here also put full stop, but an interrogative sentence always ends with an interrogative or question mark sign. See here. Where are you going?
Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Okay, हमें नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो. That's why here question mark sign. It is an example of interrogative sentence. Have they done their work? Have they done their work? Means I am not clear. नहीं पता. हाँ, I don't know. No, I don't know. नहीं पता कि किया या नहीं किया. That's why question mark लगा दिया कि have they done their work. उन्होंने वर्क किया है, नहीं पता है. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Okay. What is your name? What's your name? I don't know. What's your name? That's why here is interrogative sentences. What is your friend's name? I also don't know your friend's name. Here also again interrogative sentence. Now guys, third one is imperative sentence. Imperative sentence is that express command. किसी command को express करता है. Request, suggestion, advice or entreaty. Okay, those sentences are called interrogative sentence. These sentences end with a full stop. Here also full stop. In assertive also full stop. In imperative also full stop. In the imperative sentence, command. What we are giving? Command. जैसे request, suggestion, order. See here. Stand up. Stand up. What is this? Order. ये order दे दिया. Stand up. खड़े हो जाओ. Okay. Request. Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. It's my request. It's my request. Okay, guys? Then it is also imperative sentence. You know, guys, have you observed here one thing? In the imperative sentence, there's no subject. I don't know with whom I am asking या with whom anyone is asking. नहीं पता होता है. Means कि imperative sentence में subject जो होता है वो hide रहता है, छिपा रहता है. Okay, guys? In the imperative sentence, subject is always hide. Okay? Complete your work on time. Complete your work on time. It is also can be suggestion कि भी complete your work on time. अपना work जो है time से complete करो. Now next one is there exclamatory sentences. The fourth one and last one is here exclamatory sentences. It is a sentence that expresses strong feelings related joy, sorrow, surprise, anger, delight. These sentences end with the exclamation sign. हाँ जी dear guys, क्या होता है कभी कभार अचानक से हमें कोई फ्रेंड मिल जाता है जो काफी दिनों से ना मिला, कहते वाह you so many time over. Now like this expressions are, we are saying any one thing which is looking so beautiful, we are saying great. Okay, suddenly any one idea is coming, then what an idea. Like this are expressions. If we are suddenly we are hurting ourselves, otherwise anything else, we are saying a loss. These are the exclamatory words. Dear guys, always exclamatory words always end with the exclamation sign. I am telling you, hooray. We have won the match.
hooray, we have won the match. Here, hooray, it is the word related joy. Okay, ये क्या हमारी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है कि hooray, we have won the match. यहाँ पे हमारी खुशी सरप्राइज मीन्स हमारी एक्सप्रेस हो रही है. That's why after exclamation word we use here exclamative sign. Okay, exclamative sign हमने यहाँ पर यूज किया. Few sentences we are at loss. At loss. He fell down. अरे वो गिर गया. At loss. He fell down. अरे वो गिर गया. Then it is also exclamation sign. It is of sorrow. दुख का है. Okay, अरे ऐसा हो गया. Okay. Then here also exclamation sign. Few sentences are there. There we are making sentence like the exclamatory. What an idea. What an idea. Full sentence be expressing as an exclamatory sentence. That's why here I put exclamatory sign. Here only exclamatory word. यहाँ पे हमने जो exclamatory word यूज किया है उसके बाद का जो हमारा सेंटेंस है सिंपल है. ओके, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी बना दिया. मीन्स कि केवल हमारा तरीका चेंज हो जाता है. जो हमारे कोई भी चीज अचानक मिलती है, अचानक कोई भी चीज हम उसे देख के डर हो जाते हैं, खुश होते हैं, तो तरीका चेंज हो जाता है. जैसे कि अच्छा सा फ्लावर देख लिया तो कहते हैं कितना सुंदर फूल है, सिंपल ही कह दिया. और जो भी बहुत अच्छा लगता है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या कहेंगे? वाह. ओके, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर मींस एक्सप्रेशंस आर चेंजिंग हियर. ओ, ओ, expressions are changing with o. Oh, I forget my purse. O, है ना? I forget my purse. Suppose कहीं मार्केट जा रहे हैं, पर्स ही खो गए. ठीक है, घर पे भूल गए पर्स. क्या होगा वहां पे? ओ आई फॉरगेट माई पर्स. क्या एक्सप्रेशन होगी वहां पर? ऐसे ये तो नहीं कहेंगे अरे पर्स भूल गए. सिंपल ही नहीं कहने वाले. वहां पे अचानक ही निकला ओ आई फॉरगेट माई पर्स. यानी जनरली एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं. देन सडनली जो एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे माइंड में, मे बी वो चाहे जॉय के हो, चाहे सारो के हो, चाहे सरप्राइज के हो, चाहे एंगर गुस्से के हो, ओके, चाहे डिलाइट के हो, दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स. मीन्स की एक्सप्रेशंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड they are always using with an exclamation sign. If there is exclamatory sentence, then after the sentence, if there is exclamation word, then after the word we are using. Here I am writing my friend goes to school. Dear guys, tell me which one sentence it is. My friend goes to school. कौन सा sentence है ये? It is assertive, interrogative, imperative, exclamatory. Which one? Because it is full stop here. Now you will say imperative. No, it's not imperative. Here, my friend. Subject से हमारी शुरुआत है. समझ जाओ. Means it is assertive. Then assertive which one? Assertive which one? Because I told you there are two type of statement. Here is positive statement. Okay guys. Now wow. What a beautiful dress. Wow, what a beautiful dress. Wow, कितनी सुंदर ड्रेस है. Then exclamation. Very easily here you can understood with the help of exclamation sign. Okay.
wait for some time. कुछ समय के लिए वेट करो. Wait for some time. Here you are thinking here is full stop. It is imperative. No guys. Wait for some time. कुछ समय के लिए इंतजार करो. It is suggestion. कोई हमें सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस दे सकता है. ओके कि हाँ भाई कुछ देर के लिए और वेट कर लेते हैं. ओके देन इट इज imperative sentence. Now what are you doing? आप क्या कर रहे हो? Very easily you can understood here with the question mark sign. इस समझ जाओगे कि it is an interrogative sentence. Okay guys, I hope you understood sentences very easily, and if you like the video, subscribe my channel and also give comment in the comment box, and so that I can understood whatever the next thing you need. Okay guys, keep it up.